Hello friends, welcome to Money Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. In today's video, we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 1st April 2023. So let's start with the news. The first news is about the export policy of India. So a new export policy has been unveiled by the Ministry of Commerce and Industry. So Union Commerce, Industry and Textiles Minister Piyush Goyal has unveiled a new foreign trade policy. नॉर्मली इसके पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आता था तो उसका एक टेन्योर होता था लाइक फॉर 5 years. ओके, बट हियर दिस पॉलिसीज फॉर द फर्स्ट टाइम इज ओपन एंडेड. देयर इज नो टाइम लिमिट एट दिस पॉलिसीज फॉर 5 years और फॉर हाउ मेनी ईयर्स. ओके, सो अगर आप यहाँ पे क्या देखेंगे दैट द पॉलिसी इट अलाउज फॉर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन वर्ल्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री फीडबैक. ओके, सो इट इज लाइक एन ओपन एंडेड फॉरेन पॉलिसी. ओके, सो यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इट मूव्स अवे फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर्स बट लोअर्स अ फ्यू कॉस्ट फॉर स्मॉलर फर्म्स एंड प्रॉमिसेस सुपर क्लियरेंसेस along with the one time amnesty scheme for export obligation default. उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट लास्ट टाइम जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आया था इट केम इन 2015. Now for this time the policy has come in 2023 and the new policy will kick in from 2023-24 and aims to almost triple India's goods and services exports to $2 trillion by 2030 from an estimated $760 billion in 2022-23. So India's exports were $435 billion in 2015-16 when the previous policy was introduced, and they have grown nearly 75% to an estimated $760 billion in 2022-23. So ये एक पॉलिसी का आप समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है. उसके बाद आपके लिए स्टैटिक क्वेश्चंस भी है दैट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT संतोष कुमार सारंगी. सो इज द DGFT ऑफ इंडिया, दैट इज संतोष कुमार सारंगी. देन द न्यू पॉलिसी डज नॉट हैव एनी सनसेट डेट. जैसे मैंने कहा ना कि ये इसमें कोई ये नहीं है कि ये पॉलिसी कब ख़त्म होगा. जैसे इसके पहले होता था कि लाइक फॉरेन पॉलिसी केम इन 2015 and it will end in 2020. So nothing like that over here. So there is no sunset date over here, and it will be tweaked based on the emerging world trade scenario and industry feedback. It means the policy it is open ended and the schemes which will be sanctioned under it they will be time bound. तो जो various schemes होंगे foreign trade policy में तो वो टाइम बाउंड होंगे पर पॉलिसी इटसेल्फ टाइम बाउंड नहीं है. उसके बाद यहाँ पे कोई मेजर स्कीम्स भी अनाउंस नहीं है एक्सेप्ट एक, दैट इज एमनेस्टी स्कीम अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम दैट अलाउ इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस. ओके, now about the foreign trade policy again we will do this news about the Donald Trump in the editorial in detail. Okay, so we can skip right now from the front page, so we will move there. The next is Gujarat High Court sets aside CIC order seeking information on Prime Minister MA degree fines Arvind Kejriwal. तो ये जो इशू है यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पहले गुजरात यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया था टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर MA डिग्री टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. नाउ द गुजरात हाई कोर्ट हैज सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड हैव इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹25,000. उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए दैट इज सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट. So if you will see that यहाँ पे जो Solicitor General है तुषार मेहता is saying that it violates the privacy, that is no student's degree can be disclosed under the RTI as it violates the privacy of the individual. So if you will see the section 8 of the RTI Act, that is Right to Information Act, so there are various exemptions which have been made, that certain informations which are very important from the security point of view which can cause breach of parliamentary privilege or which can lead to contempt of court. Okay, then which can lead to breach of privacy. So those informations have been exempted from RTI Act and they are covered under section 8 of RTI Act. Okay, the next is साहित्य अकादमी विनर सारा थॉमस पासिस अवे. तो यहाँ पे आपको एक ऑथर और उनके बुक्स की तरह आपको याद रखना है. तो सारा थॉमस who has recently passed away. So इनका जो फर्स्ट वर्क था दैट वाज जीवितम ओरू नादू पब्लिश्ड ओके एट द एज ऑफ 34.
Then she is also the winner of Kerala Sahitya Akademi Award in 1979. Then Devya Makkal, another popular work of hers, focused on the prejudice and discrimination that Dalits have continued to face. Then she also received the Kerala Sahitya Akademi Award in 2010 for overall contribution to Malayalam literature. So over here, you have to take notice that once she has been awarded Kerala Sahitya Akademi Award twice, one in 1979 for her book, okay, that is her 1978 novel Naramadi Pudva, about the travels of Kanakambal, who gets married and becomes a widow as a teenager, and her struggle to overcome the stifling customs of the community. देन एक टाइप का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो उनको मिला था वो 2010 में मिला था. नाउ कमिंग टू डिबेटेबल इंडाइटमेंट, सो दिस इज अबाउट द डोनाल्ड ट्रम्प. दिस इज द हश मनी पेड डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रैंड जूरी है न्यूयॉर्क कोर्ट में, सो दे हैव इंडक्टेड हिम in the hush money paid to an adult film actor Stormy Daniels in 2016 before the presidential election of that year. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प के जो पहले जो अटॉर्नी जनरल थे माइकल कोवन, ही पेड $1,30,000 टू मिस डैनियल टू स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग पब्लिक विद द स्टोरी ऑफ देयर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक्सपेंसेस के बारे में. सो Mr. Trump is said to have reimbursed the amount to Mr. Cohen after he won the election, which was then passed off as legal expense. Okay, so यहाँ पे जो charges लग सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर, that is falsification of business records, but that is only a misdemeanor offense in New York. तो न्यूयॉर्क में it is just a misdemeanor offense, but not a felony. Okay, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है मैनहट्टन के, now he has to link this falsified bookkeeping to Mr. Trump's to show that business records in question were falsified to cover up an entirely different crime. तो यहाँ पे जो लिंक जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या डीए को बनाना पड़ेगा, एक लिंक बिठाना पड़ेगा कि ये जो पेमेंट है जो जहाँ पे फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हुआ है, ठीक है ना, that has been done to cover up a different crime. Then there is also a violation of campaign finance laws where okay कि मतलब जो इलेक्शंस के खर्चे होते हैं वहाँ पे एक लिमिट होता है अंडर फेडरल कैंपेन फाइनेंस लॉज. ओके, सो यहाँ पे इफ यू विल सी दैट ही इज आल्सो लायबल अंडर फेडरल कैंपेन फाइनेंस लॉज व्हिच रिक्वायर्स मनीज रिसीव्ड एज कैंपेन डोनेशंस टू बी डिस्क्लोज्ड विद ट्रांसपेरेंसी एंड सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक लीगल लिमिट्स. तो ये भी एक लॉ है which have been breached. ओके, बट इसका जो इन्वेस्टिगेशन था वो 2019 में क्लोज हो गया था. फाइन, अब हम आते हैं सेकंड इशू पे, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो ये खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है. ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स. तो यहाँ पे जो इंडाइटमेंट है डोनाल्ड ट्रम्प का, वेयर ही हैज सेड दैट दिस इज अ पॉलिटिकल परसिक्यूशन और विच हंट अगेंस्ट हिम and it is not going to favor Democrats in 2024 elections by polarizing the American voter base. The next is a busy season. All format cricketers will soon have to choose one over the others. So it is now we are talking about cricket. तो जैसा कि हमने देखा वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है it was concluded and it was won by Mumbai Indians and now there is a Indian Premier League जो है वो स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, और जो 2008 में स्टार्ट हुआ था. आफ्टर दैट यू विल सी दैट द वुमेन्स क्रिकेट हैज़ कम ऑफ द एज नाउ फ्रॉम पास्ट फ्यू innings. If you will see some tournaments which have been won by the Indian cricket team including the under-19 World Cup. Okay, so India won the under-19 women's World Cup by defeating England, and then there was Women's Premier League hosted by BCCI. उसके बाद BCCI ने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं to bridge the gender divide like corrective measures including central contracts, pay parity in terms of match fees, and then the last one is WPL. Now अगर अब हम देखें मेंस क्रिकेट में, सो IPL तो हो रहा है जो मई तक चलेगा. इट विल एंड अप टू in May to 28. Then in between we have World Test Championship final in England and World Cup in India later this year. So definitely there is a busy schedule for players. Okay, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पे मेंशन है कि क्रिकेट में एक ट्रेंड चल रहा है कि
people, cricket players, they take retirement not from all form of cricket, not at once. ओके, यहाँ पे चलता है कि पहले वो टेस्ट मैच से लिया, फिर ओडीआई से रिटायरमेंट लिया, फिर लास्ट में T20 से लिया। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो सचिन तेंदुलकर थे, प्लेइंग टॉप फ्लाइट क्रिकेट फॉर 25 years विल परहैप्स रिमेन्स एन एक्सेप्शन एज द प्रेजेंट जनरेशन पिक एंड चूज देयर फॉर्मेट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज अबाउट श्रीलंका ग्राउंड जीरो। तो यहाँ पे जो आपने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ा है, दैट इज द IMF हैज फाइनली has approved $3 billion loan aimed to restore economic stability and growth in Sri Lanka. And then President Ranil Wickremesinghe has said that Sri Lanka will no longer be deemed as bankrupt. Fine. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका के लिए ये एक इकोनॉमिक विक्ट्री भी है, that it will regain recognition in the international arena. Then it will also enable Sri Lanka to take loans from other international financial institutions including World Bank, that is low interest loans from other. Then it will also boost foreign investors confidence in Sri Lankan economy, and emergence of new opportunities and foundation to build a strong new economy will be laid. Now if you will see the impact of this economic crisis, so just read this paragraph, you will come to know Sri Lankans, they did not have to wait for the austerity measures to fully kick in to experience the effect. ठीक है, जब भी IMF जो डील करता है, जैसे कि ये जो IMF की जो डील थी श्रीलंका के साथ, इट वॉज 17th since 1965 which entails a $3 billion loan over 4 years which was based on several conditions. ओके, तो एक जो कंडीशन था उसमें ये था कि दैट श्रीलंका हैज़ टू इम्प्रूव इट्स गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन फ्रेमवर्क. ओके, एंड देन there were some other conditions like increasing the bank rate, okay, which would have caused more hardship in the Sri Lankan economy. But if you will see that यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है, जो नॉर्मली जो श्रीलंका के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये बेल आउट पैकेज नहीं है, ये स्ट्रक्चरल एंगेजमेंट है. फाइन. तो यहाँ पे जो श्रीलंका की जो कंडीशन है, फाइन, तो उसने क्या किया कि पहले तो $51 बिलियन का लोन डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया, प्री एम्प्टिव डिफ़ॉल्ट. उसके बाद देयर वाज शार्प हाइक इन बैंकिंग इंटरेस्ट रेट्स. देन टू फ्लोट द श्रीलंकन रूपी विच वाज ऑलरेडी डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द US dollar. Then revised taxation and increased fuel prices and electricity tariffs. Okay, so these were some of the conditions under which Sri Lanka got the IMF bailout package. But if we will see कि इतने stringent economic measures से इकोनॉमी में obviously कुछ इफेक्ट पड़ता है, but Sri Lankans, you know, that they were already experiencing a very hardship. For example, there was acute shortage of essential goods, including food, longer power cuts, food inflation of over 90%. Okay, then economy contracted by 8%. Fine. Then there was job losses, etc. Now if you will see that Sri Lanka mein, if you will see from the Wickremesinghe point, okay, so it is a political victory also. If you will see his party, United National Party, which was almost washed in 2020 general election, but now Wickremesinghe, now who is the president, under whose leadership the Sri Lanka has been able to get the bailout package from IMF, so definitely his party has again revived. Then there is a report about from the World Food Program, that is the World Food Program found that a third of Sri Lankan families continue to be food insecure. Then the government and mainstream economists see austerity measures as inevitable while reviving a better economy. Then if you will see that Sri Lanka, it has increased tariff twice since the crisis escalated last year, first in August 22 by 75% on average, and in February 2023 by 66%. Then the hike came during acute fuel shortage when families were struggling without gas and food inflation had hit about 90%. The next is audit process to be fully digitalized from today. तो यहाँ पे देखिए Comptroller and Auditor General of India, which is a constitutional office. So the current CAG of India is Girish Chandra Murmu. He has announced a full activation of One Indian Audit and Account Department, One System, a web-enabled IT application with support for multiple languages, offline functionality and mobile app for complete digitization of audit process from April 1, 2023. So this news is very important. Okay, then see the exceptions. So the only exceptions would be the defense audit offices, which would take some more time because of security issues. The next news,
Cert in may be exempted from giving information under RTI Act says center. तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था पहले फर्स्ट पेज पे सेक्शन 8 of RTI Act, which okay, so now cert in, which is also called as the Indian Computer Emergency Response Team, so it will be now exempt from responding to queries under the Right to Information Act. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे so जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट हैड given a proposal to Department of Personnel and Training to include CERT in the second schedule to the RTI Act, which deals with exempted organizations like Central Bureau of Investigation and Border Security Force. तो जो exempted organizations है, they are put in second schedule and they are exempted from giving information under RTI Act. उसके बाद अगर आप देखेंगे that CERT body, it coordinates with public and private organizations in India when cyber incidents like data breach and ransomware attacks are reported. So it also has issued advisories for software vulnerabilities as guidance for various organizations. Now if you will see that recently CERT had issued direction in April 2022 that required virtual private network providers and cryptocurrency firms to preserve data on all users. The next is highest proportional increase of COVID cases in India. So again we are here talking about a new variant of Omicron which is called as XBB.1.16. So if you will see the highest proportional increase of new COVID-19 cases, it was observed in India in the Southeast Asia region according to WHO. तो अब हम पहले ग्लोबल केस देखते हैं, फिर साउथ ईस्ट एशिया देखते हैं, फिर उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है वो देखेंगे, फिर XBB वेरिएंट के बारे में पढ़ेंगे. So this article is like very important to know everything about XBB.1.16 if you have missed this news earlier. So if you will see that there are 3.6 million new cases and over 25,000 deaths reported in the same period, and there was a decrease of 27% and 39% respectively. If you will see that in the Southeast Asia region, India, that is 18,130 new cases, 1.3 new cases per 1 lakh is followed by Indonesia. तो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया रीजन में देखोगे तो नंबर 1 कंट्री कौन है? इंडिया. सेकंड कंट्री कौन है? इंडोनेशिया. उसके बाद कौन है? थाईलैंड. तो एक तो ये देखा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में साउथ ईस्ट एशिया रीजन एक ऐसा है जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसमें भी इंडिया सबसे टॉप पे है. तो इफ यू विल सी that Southeast Asia region has reported over 27,000 new cases, which is 152% increase as compared to the previous 28-day period. Then if you will see WHO, it is monitoring the variant of interest XBB.1.5 and 6 variations which are under monitoring. Okay, that is BQ.1, BA.2.75, CH.1.1, XBB, XBF and XBB.1.16. So XBB.1.16, it is now variant under monitoring which was added on March 22. Now अब हम देखते हैं XBB.1.16 के बारे में. So it is a new Omicron variant which is responsible for increasing case in India. It is a recombinant variant of 2, that is BA.2.10.1 and BA.2.75, and it has 3 additional mutations in the SARS-CoV-2 spike protein. ये जो 3 म्यूटेशन है कौन कौन से हैं? E180V, PF486P, K478R कंपेयर टू इस पेरेंट लीनिएज XBB. उसमें से अगर आप देखेंगे जो म्यूटेशंस जो हैं, एक जो म्यूटेशन है F486P, इट इज सिमिलर टू XBB.1.5. उसके बाद देयर इज अ म्यूटेशन एट पोजीशन 478 ऑफ द स्पाइक प्रोटीन which is associated with a decreased antibody neutralization, increased transmissibility and pathogenicity. उसके बाद WHO has said that XBB.1.16 sequence have been reported from 21 countries. अब हम थोड़ा सा लिथियम के बारे में पढ़ लेते हैं. ये है तो नेशनल न्यूज़ में, but it is more of a part of international news and it is related with climate change, or you can say green energy. So we are talking about lithium. So Australia, okay, if you will see that Australia, it is the world's biggest exporter of lithium and much of its lithium goes to China, which dominates the lithium ion battery production market. तो अगर आप lithium देखेंगे तो lithium, it is a critical metal which is necessary for making batteries for electric vehicles. So Australia has said that it will have a diversified market for its lithium export, which includes India. Then they all be cornered by the US.
तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज एम्फसाइजिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स लिथियम मार्केट। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिसेंटली एक एक्ट पास हुआ था, दैट इज इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, पास्ड ऑन अगस्त 2022। इस एक्ट के अंदर क्या है, दैट इट ग्रांट सब्सिडीज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन यूएस। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट किए जाएंगे, दैट there will be heavy tariff on that, but there will be subsidies to those electrical vehicles which will be produced in US. So यहाँ पे क्या है कि the companies which are producing electric vehicles in their home country, they can think of starting their plants in US. So European Union and South Korea, they have criticized this Inflation Reduction Act on the ground that it made electric vehicles imported in the US from their regions uncompetitive. Now अब हम आते हैं, एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स इज इंक्रीजिंगली एन एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इन्वेस्ट $3 मिलियन टू इन्वेस्टिगेट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट इनटू lithium and 3 cobalt prospecting project in Australia. So India is going to invest $3 million in Australia for two minerals, that is lithium and cobalt. The next is Russia might put strategic nuclear weapons in Belarus. So Russian strategic nuclear weapons might be deployed in Belarus along with part of Russia's tactical nuclear arsenal. The next is UK to join Trans-Pacific Partnership Trade Treaty. So UK has announced that it is going to join the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. So if you will see that it is a 11-member Asia Pacific trading bloc which without the UK accounts for 13% of global GDP. The next is NATO chief says Finland to become member. So यहाँ पे देखिए कुछ important चीजें हैं। NATO chief कौन है? Jens Stoltenberg. So 2 countries had applied for the membership of NATO. Among that, now Finland is going to become the member and Sweden is expected to join it soon. So after Turkey has ratified the inclusion of Finland, so now Finland is going to join the NATO finally. The next is core output rose 6% in February. So output across India's 8 core sector rose at a 3-month low pace of 6% in February as growth eased from January's revised estimate of 8.9%, which was the highest uptick in 7 months. ठीक है, तो जो कोर सेक्टर होता है which combines about 40.27% of the index of industrial production, so it consists of 8 industries. So if you will see that these 8 industries are coal, crude oil, petroleum refinery products, ओके, नेचुरल गैस। तो जो 4 सेक्टर हैं वो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है ना, कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। बाकी 4 देखिए कौन कौन सा है, सीमेंट, स्टील, ओके, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, देन इलेक्ट्रिसिटी। अब कोर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, दैट इज 40.27%। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड दिस is released by the National Statistics Office. The next is according to RBI, current account deficit narrows to 2.2% of GDP in third quarter of financial year 2022-23. तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन विजिबल्स एंड इनविजिबल्स, ओके, तो इट हैज नैरोड डाउन टू 2.2% ऑफ जीडीपी, फाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस एक्सपोर्ट्स, इट रिपोर्टेड अ ग्रोथ ऑफ 24.5% ईयर ऑन ईयर ऑन द बैक ऑफ राइजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर, बिजनेस एंड ट्रैवल सर्विसेज। द नेट सर्विसेज रिसिप्ट्स इंक्रीज्ड बोथ सिक्वेंशियली एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। नाउ the next is private transfer. So private transfer receipts, mainly remittances by Indians employed overseas, amounted to $38.8 billion, an increase of 31.7% from the year earlier. Then about FDI. So the net FDI declined. So in a financial account, net FDI decreased to $2.1 billion from $4.6 billion a year earlier. Then net foreign portfolio investment, it recorded inflow of $4.6 billion as against the outflow of $5.8 billion.
Then fiscal deficit touched 82.8% of full year target in February. So the center's fiscal deficit touched 82.8%. मतलब जो budgetary estimate था उसका 82.8%. So if you will see, the fiscal deficit or gap between expenditure and revenue collection of the government stood at rupees 14.53 lakh. So friends, that's all for today. We will meet next week with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.